Hi, Anand. Most of the time, people search for news, and those news are actually you are already late. Those people who are at a top level, they know it. When you listen news, when you follow any influencer over social media, you are late. Most of the cases, you are late. You don't know the intention of the people. But when you come closer to the information, try to understand certain corporate filings. You are actually searching a gold mine. People forget that corporate filings are the source of going to the particular script. How you can do reverse engineering. Either you are going from a वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम एक्शन, बहुत बड़ा वॉल्यूम में कुछ काम हो रहा है, क्यों हो रहा है देखो, नहीं तो कॉर्पोरेट फाइलिंग देखो. सो वी क्रिएटेड the how you can, because you may not be having everyone in your surrounding who can actually give all right information to you. You'll be the last person. So we created this platform where we are keeping all the important corporate filing in your fingertips. What we have done, कि आप अगर corporate filing में आ जाओगे, so we have given acquisition. एक कंपनी अगर एक्विजिशन कर रहा है, वो एक्विजिशन में डेफिनेटली एक रेवेन्यू इनफ्लो आ सकता है, एसेट एडिशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारे चीज आप एक ही क्लिक में देख सकते हो. यू वांट टू सिलेक्ट अ डे ट्रेंड, यू कैन सिलेक्ट अ डे ट्रेंड. यू वांट टू सी लास्ट 4-5 days रिकॉर्ड, you can select 4-5 days record. Now what board meeting is happening? Some companies are doing shareholders meeting or any other AGM, EGM, all information. Why companies are doing this kind of a meeting? Some are regular meetings, some are extra ordinary general meeting, EGM they are doing. So now why company doing a bonus, buyback? Why suddenly change in auditors? Which are the company frequently doing a change in auditors? Go and check that exactly if you are tracking those businesses and that company is doing, it's a 3 years interval auditor change, or it's a some kind of a red flag we are finding ahead, like 3 साल से पहले ही आपका कोई चेंज हो रहा है. सो नाउ चेंज इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. वही कंपनी चला रहा है. दोज पीपल हु आर रनिंग द कंपनी, इट मे बी एक खराब कंपनी है, खराब प्रमोटर है, बहुत बड़ा एसेट लेके बैठा है, अच्छा एसेट लेके बैठा है, बट उसको चलाना नहीं आता है. सडनली एक अच्छा मैनेजमेंट आ गया, सारे चीज बदल जाएंगे कंपनी में. वी हैव सीन इन अ सीजी पावर, वी हैव सीन इन अ मेनी अदर स्क्रिप्ट वेयर मुरुगप्पा, BGR Energy also, some NCLT is going on for a long time, and many other company, no, wherever CG Power has actually, I think NCL Industries, where CG Power is participating. So this kind of information where management change is happening, or it may be a regular updates of management informations, like some board of director resign or some people has joined, appointed, what is their role? All these things will get in this particular level. Now management shout for multiple clarification or clarification from the companies that due to volume, due to any other things. So you will get all this important level over here. Company is doing commencement of commercial production or adding capacity. So what exactly they are doing? If they are doing it, then definitely that is going to increase the revenue. अगर कंपनी एक बड़ा प्लान दिया है, उस प्लान से आपका रेवेन्यू आएगा, या 100, वॉट एवर 100 मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी से काम कर रहा था, नाउ दे आर डूइंग मे बी 150, 200 मेट्रिक टन पर एनम. तो जो भी आपका है, अगर कोई कंपनी अगर 50% यूटिलाइजेशन कर रहा था, 75%, कुछ, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन अ डिफॉल्ट. अगर कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया है, किसी कंपनी का लोन चल रहा है उसमें डिफॉल्ट किया है, इंटरेस्ट पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, और हो सकता है वो डिफॉल्ट का अपडेट भी हो सकता है.
कि कंपनी अभी एनसीएलटी में जाएगा, इट मे बी अ कॉम्प्लिकेटेड. सम पीपल विल बी बेटिंग ऑन दोस company because they may be having some more other news, and you may feel no nahi default है, fraud है, so I will not go. How people will interpret the news, so it depends on how much knowledge you have. Now company is doing demerger, that information also you will get demerger related information. If any key person or anyone demise related information you will get on a demise section. Now come on a disclosure, you'll get all disclosure, normal disclosure or takeover related, substantial takeover acquisition related disclosure you will get over here. So in this way, few important things like a fundraising, what one should actually look at, QIP, because when company is doing a preferential fundraising, say acquisition, or company going for an insolvency, or company is increasing their capital, these are few or start like sudden change in volume, company is getting a huge order. These are very important information because all are linked with the company's revenue. Fundraising, why they are doing fundraising, why they are allotting the preferential, कितने डिस्काउंट में दे रहा है किसी को और किसको दे रहा है प्रेफरेंशियल. All those informations are very very important. So we kept in a single page where you can search. Even if you want to understand, no, we kept a different, that high priority. मुझे पता नहीं है, I'm new, I don't know how to segregate all announcement. So we kept high priority filing section. कि आपको देखना है ना, मुझे ना प्रेफरेंशियल इशू ही देखना है, और मुझे आराम से बैठ के सैटरडे में इसको नोट डाउन करना है, मुझे कुछ मिस नहीं करना है कि अच्छा लास्ट इतने दिनों में ये सारे प्रेफरेंशियल हुआ है. अब जाके मैं देखता हूँ कि ये पर्टिकुलर कंपनी में जो हुआ है, तो वो कंपनी का प्राइस अभी डिस्काउंट में चल रहा है, कंपनी ने डिस्काउंट में किसी को दिया है या आपका प्रीमियम में दिया है. अगर प्रीमियम में किसी ने आपको प्रेफरेंशियल दिया है, तो आप सोचो कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है. क्यों, डिस्काउंट में तो दे सकता था मार्केट प्राइस से. नाउ स्टाइल बजर, इफ यू गो एंड रीड, 328 rupees they have given a preferential. Even Cupid also bought at a 336 rupees. Now market price w- came down to 240, now hovering around 300. The point is, as an investor, you should look at the things. It is not good or bad. Why they are raising fund, why it is at premium, how you are going to connect all these things. So all those information we kept, so people will not be having any kind of a issue. Suppose you want to see domestic orders, you can see domestic orders. Okay, power make machineries. So these are the orders companies are getting. These are the revenue generating information कि आगे जाके आपका कंपनी अच्छा करेगा. ये कंपनी को अच्छा ऑर्डर मिला है, जाके आप पढ़ो, देखो कौन कॉल आप सुनो, या आप पढ़ो, whatever it is. So you are getting all information. So now tell me that why people request someone's call, someone tips, all these things. एक ही चीज एक रिटेल को करना चाहिए. दे शुड वेरी क्लोजली ट्रैक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन. दे शुड अंडरस्टैंड वैल्यूएशन एंड इवेल्युएट अ बिजनेस प्रॉपरली, कि क्या बिजनेस को मैं क्या वैल्यू दे सकता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है. आप एकदम बहुत ही खराब बिजनेस में जहाँ पे कैश फ्लो नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ा आप कुछ वैल्यूएशन दे रहे हो, दैट इज नॉट राइट. एनीवेज, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. नाउ कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन. अब सारे चीज आपके पास आ गए. ओपन ऑफर, कंपनी को ओपन ऑफर आ रहा है, तो ये ओपन ऑफर के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, ठीक है. तो ओपन ऑफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विच मेनी स्मार्ट इन्वेस्टर्स ट्रैक. नाउ इट इज, यू आर इक्वल इन अ सेम पेज. आप रिटेल हो या आप स्मार्ट हो, ये आपका एक्शन डिसाइड करेगा. आप अगर ये सारे इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करोगे, अच्छा ये सारी इंफॉर्मेशन को, अच्छा अभी हो रहा है, आज आप उस लेवल पे नहीं हो, यू मे स्किप बट यू मे ऑब्जर्व.
इस कंपनी में ओपन ऑफर आया तो किसके पास से आया, वो कौन सा कंपनी एक्वायर कर रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है, ये सारी चीज सर्च करना होता है। Why this company giving open offer to this company? What are the assets are available? ये नुकसान वाला कंपनी को बाई तो नहीं कर रहा है क्या, और भी नुकसान में चला जाएगा? सो this open offer is just a change in management. Someone, most of the cases, कि they are giving a proposal to the existing promoter कि मैं मुझे 25% का इस प्राइस में आप शेयर वापस कर दो। ओपन ऑफर वैसा भी रहता है प्रोमोटर के पास से, नहीं तो शेयर होल्डर के पास से। कंपनी विल गिव कि मेरा तो ये प्राइस में आपका चाहिए। आप अगर कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है एंड पब्लिक इज गिविंग दोस शेयर बैक टू द एक्वेरर, तो क्या होगा, उसके पास वोटिंग राइट चला जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस वो होस्टाइल टेक ओवर नहीं होता है। आप एक म्यूचुअल होता है एग्रीमेंट जहाँ पे एक कंपनी एग्जिट करना चाहता है, दूसरा कंपनी आना चाहता है। तो एक्विजिशन, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे, with a small click, no, you'll get all this information. Now it is up to you to just open a PDF, ask ChatGPT, AI, whatever you are using, or read. I know people, most of the people are taking information from AI. Use AI only when you know how to fetch information. I'll be making all those videos as well. How one can use, how one can read certain con call in a certain manner. So it may help them. Apart from, I will prefer कि कॉन कॉल सुनो, उसके साथ साथ क्या चीज आप एक एआई के हेल्प से कर सकते हो। सुनने को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, जितना सुनोगे उतना आपका ना दिमाग में एक वेयरिंग अच्छा बैठेगा। मेनी इंफॉर्मेशंस, हाउ यू विल बी इंटरप्रेटिंग, नो, इट इज वेरी डिफरेंट देन अनदर पर्सन। तो ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कॉर्पोरेट फाइलिंग में दिया है। तो कॉर्पोरेट फाइलिंग सेक्शन इज वेरी एक्साइटिंग सेक्शन, आप देख सकते हो जाके। एंड वी हैव सेग्रीगेटेड अनाउंसमेंट एंड हाई प्रायोरिटी फाइलिंग इन अ टू different section. Thank you everyone, and we'll be making some more videos on a different other like a bulk deal को कैसे देखना है, why bulk deal is important, how we have given a high impact deals and all. So that will come on a next video. Thank you everyone.